మహారాష్ట్ర నూతన సీఎం ఎంపిక బాధ్యతను బీజేపీ అధిష్టానం చూసుకుంటుందన్నారు శివసేన అధినేత ఏక్నాథ్ షిండే. సీఎం పదవిని ఆశించడం లేదంటూ షిండే చేసిన వ్యాఖ్యలతో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్ క్లియర్ అయిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు తాను అడ్డంకి కాబోనని ప్రధాని మోడీకి తేల్చి చెప్పినట్లు షిండే స్పష్టం చేశారు. సీఎం ఎంపికలో మోడీ, అమిత్ షా నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామని, మహాయుతి నుంచి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయినా అభ్యంతరం లేదన్నారు షిండే. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी मी फोन केला होता. मी त्यांना फोन करून सांगितलं की सरकार बनवताना तुम्हाला निर्णय घेताना कुठलं काही असं अडचणीचं आहे किंवा अडचण आहे माझ्यामुळे किंवा आणखी कुणामुळे हे कधी मनात आणू नका. तुम्ही आम्हाला मदत केलेली आहे. तुम्ही आम्हाला 2.5 वर्ष संधी दिली या ठिकाणी या राज्याचा विकास करण्यासाठी, या राज्यामध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी, सगळं करण्यासाठी. त्यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या. तुम्ही तुमचा निर्णय जो आहे तो निर्णय एक बाबा महायुतीचे म्हणजे प्रमुख म्हणून की बाबा एनडीए, आमचे एनडीए, देशामध्ये एनडीए आणि महाराष्ट्रात महायुती, त्यामुळे तुम्ही घेतलेला निर्णय हा जसा भारतीय जनता पक्षासाठी असा जसा अंतिम असतो तसा आम्हालाही तो अंतिम आहे. त्यामुळे तुम्ही निर्णय घेताना कुठलेही काही असं वाटू नका की माझी अडचण आहे का, एकनाथ शिंदे काय अडचण आहे का, बिलकुल नाही. त्यामुळे मी काल मोदी साहेबांनाही फोन केला, अमित शाह साहेबांनाही फोन केला. माझ्या भावना त्यांना मी सांगितल्या की सरकार बनवताना माझा कुठलाही अडसर मनामध्ये ठेवू नका. तुम्ही जो निर्णय घ्यायचा तो तुम्ही निर्णय घ्या आणि तो निर्णय मला मान्य असेल.